हेलो सर। ठीक तो प्रैक्टिकल मु पठेछि अटैचमेंट पठेछि होला हाँ सर। सेरा केते थिला 14 ना 16 ना केते थिला सरी जाइथिला एटा पाइथन सरी जाइथिला एटा बोथे चलथिला मोर 14 सरथिला 14 सरथिला 14 सरी थिला तो हम्म तो पाइथन को करिए डा पाइथन सुबुनी पाइथन 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 काली आउट पढी कनी काली नहीं पाइथन आमे करबा काली कोन ट्यूसडे वेडनेसडे दिन करबा पाइथन होला कारण मु प्रैक्टिकल गुडा सेट करूची तमरो डाटाबेस कनेक्टिविटी ये गुडा तो से गुडा आमे वेडनेसडे दिन करबा काली मोर सरी जीवो से पाइथन रो सेटिंग सब प्रैक्टिकल गुडा सब आमे वेडनेसडे दिन करबा ठीक अछि ओके सर 14 रो आउ थिला 14 सब सरी जाइथिला बी और सी थिला सरी जाइथिला तमर प्रैक्टिकल किछि आगु बोले ए जो ये प्रोजेक्ट किछि आगु बोललानी सर मोटे किछ बुझा पडुनी अंडा बुझा पडुनी किछ जिंस बुझा पड़नी ठीक अछि गोटे क्लास नै जेबे तमरो प्रोजेक्ट सर in this section we will be learn to implement transaction understand managed code what is a deadlock. A deadlock is a situation where each transaction waits for a lock on each other object to the released, right? For example, suppose deadlock माने कोन धरो गोटे टाइम रे मु तुमको कॉल करूँ द सेम टाइम तमे मते भी कॉल करूँ राइट तो आ माने कोन मो रिंग तुम पाखु जाउची ना तुम रिंग मो पाखु आसी कारण सेम सिचुएशन रे दुटा ट्रांजैक्शन गोटे पॉइंट को एक्सेस करू ताको जे डेडलॉक राइट जेताळे सेम टाइम रे दुटा ट्रांजैक्शन गोटे पॉइंट को जेताळे एक्सेस करबो ताको जे डेडलॉक पोजीशन यस सर in the मोर ट्रांजैक्शन 1 मोर R1 को एक्सेस करथला देन ट्रांजैक्शन 2 मोर R2 को एक्सेस करथला द सेम टाइम रे ट्रांजैक्शन 2 मोर R1 को जदी मोर एक्सेस करबो से आउ ट्रांजैक्शन 1 जदी मोर R2 को जदी एक्सेस करबो सेटा होछ मोर डेडलॉक पोजीशन you can resolve deadlock by setting deadlock priority customizing lock timeout detecting deadlock using sys.dm underscore execute underscore request, avoiding deadlock using update locks. Setting deadlock priority को सेट करिया पे हेले तमरो यूज करिया पड़िबो deadlock priority ऑप्शन तुमको यूज करिया पड़िबो ए सब जिंस कोन कहले ए सब जिंस जो एबे जो लास्ट तमरो आसी ट्रिगर जाय तमरो माने एसक्यूएल लो मेन चैप्टर तमरो ट्रिगर जाय राइट ट्रिगर जाए तमरो यूज हुए बाकी आप पर जो ए सब जो चलची प्रायोरिटी एटा हो ऑप्शनल राइट हमें माने इमिते बहुत रेयर केस से तुमको रिक्वायर्ड पड़ियो जे मते प्रायोरिटी सेट करिया पड़िबो मते सेक्शन सेट करिया पड़िबो मते थ्रेड सेक्स करिया मते सेट करिया पड़िबो तो ए सब जिंस मोर ऑप्शनली मोर आसी राइट फिर भी तुमको जानिबार अछि setting deadlock priority. The deadlock priority option control how a particular section react in a deadlock position. The syntax is set deadlock priority low normal option ले तमें set करी परिबो. Customizing lock timeout. The set lock timeout statement can be used to set the maximum time that a statement waits on a blocked resource. Syntax is set lock timeout then timeout period. Detecting deadlocks.
SQL server ends a deadlock by automatically selecting the deadlock victim. सुबह मु तमरो XML प्रैक्टिकल करिछि देइछि तुम किछि हां XML रो अधा हेतिला अल्प थिला अच्छा ठीक है the sys.dm underscore execute underscore request returns information about each transaction that is executing within SQL server can be used to detect the transaction that is causing the deadlock. For example, select asterisk form sys.dm underscore execute underscore request. Avoiding deadlock by using the update locks. SQL Server allows only one transaction to obtain an update lock on the resource at a time. The update lock is converted to an exclusive lock if a transaction modifies a resource. Otherwise, the lock is converted to share mode of lock. Which of the following concurrency problem is also known as dirty read? Uncommitted dependency, phantom problem, inconsistency analysis. uncommitted dependency Which of the following locks enable other to view the data being modified by the current transaction? Share lock, exclusive lock, update lock, intent lock, bulk update lock. जानी What जानी नहीं share lock. Which of the following locks prevent your database from deadlock? Intent lock, update lock, share lock. intent lock update lock can be What is managed code? Any .NET supported language that runs the common language runtime is called a managed code. .NET supported language माने कौन? .NET गोटे प्लेटफॉर्म से प्लेटफॉर्म को जो लैंग्वेज तमरो सपोर्टेड करे ताकि .NET supported language लाइक तमरो C# हो C++ हो एवडा सब होची मोर .NET supported language. Let us see how to manage codes are executed in CLR. जेमते अछि मोर .NET supported language देखो VB कोड अछि C# कोड अछि C++ कोड अछि तो प्रत्येकटी कोड रो प्रत्येकटी लैंग्वेज रो निजर कंपाइलर थाए तो निज निज कंपाइलर रे आईएल मैनेज कोड तम रहे ता सेठू मोर कॉमन लैंग्वेज रन टाइम आसे कॉमन लैंग्वेज रन टाइम एक्जीक्यूटेबल कोड देन इन द ऑपरेटिंग सिस्टम. CLR integration allows the database developer to write the code in any of the .NET supported language, allows to run managed code within a database, provides the following benefits: better programming model, common development environment, and ability to define data types. The CLR integration in SQL Server can be represented as shown in the following figures. That is SQL engine re moro CLR representation achi. Prathame मोर CLR representation ru hosting layer ru SQL OS layer, then Windows operating system. That is जदि मु reverse array जि प्रथम अब मोर Windows operating system ru instruction देबी, then SQL operating system को layer को सी जिवो, सेठु मोर hosting layer को जिवो, hosting layer ru CLR को जिवो. yes Let us discuss the need for the managed code in SQL Server. You should use TSQL statement when you need to perform data access and manipulation operation that can be done using TSQL statement. Implement programming logic that can be easily implemented using TSQL programming constructs. You should use manage database object when you need to implement complicated programming logic, access external resource such as calling a web service or accessing the file system, implement a CPU intensive functionality.
कहला which of the following option is supported by .NET and root by TSQL? Writing queries, creating procedure, object orientation, writing triggers. Whatever. .NET and not by TSQL. Object orientation. सर काहेकि एते कहउचंती In this session, we'll be learned to implement managed database objects. To create managed database object, you need to perform the following steps: create a managed code in any of the .NET programming language. Compile the code to create an assembly. Import and configure the assemblies in the database engine. Create a database object based on the imported assembly. Eta moro VB, C#, C++ coding component मोर जीवो सेटा मोर .NET framework रे मोर build हबो assembly CLR integration DLL रे then मोर आसीबो SQL data definition create assembly create function create procedure create trigger create type then सेठु आसीबो मोर server रू आसी मोर access करिवो कि execute the query या फिर मोर CLR integration in SQL server. Assemblies can be a .dll or .exe file that contains compiled managed code. Can be imported using the create assembly statement. The syntax is create assembly, assembly name, then form. Tamar rahila tamara ta syntax rahila. Permission the underscore set parameter can accept any of the following values: safe, external access, and unsafe. Safe does not allow the assembly to access an external resource. External access allows the assembly to access some external resource such as file, network, environmental variable, and registry. Unsafe allows access to any resource within or outside SQL server. For example, create assembly name रहला form तारा path रहला with permission underscore set equal to safe. Create an assembly named credit card validator from the credit card validation.dll assembly file within with the permission set is safe. You can update an assembly by using the alter assembly statement. For example, alter assembly credit card validator with permission underscore set equal to external underscore access. Change the permission set of the assembly to external access. You can delete an assembly by using the drop assembly statement. For example, drop assembly then assembly name, right? Simple drop statement. yes sir Delete the assembly. Which of the following permission will you use to call unmanaged code? Code safe, external underscore access, or unsafe? external access unsafe What is a managed database object? A managed database object refers to an imported assembly. By default, SQL server does not allow the running of the managed code on the server. To enable CLR, you need to use the following statements: sp underscore configuration, CLR enabled 1. After executing the preceding statement, you need to run the following statement, that is reconfiguration. While developing managed database object, you will have to use the following namespace, that is system.data.sql client, system.data.sql types, max.sql server.server. जेताले तमे front end ru back end को जेताले connect करूछो सेताले एई namespace उडा तुमको यूज करबा पड़े.
विशेष करी system.data.sql client तमरे यूज करिया पड़िबो to the connect the SQL server, right? The connection string through हमें SQL server से तो हमें connect हो करेगा. The following table describe the classes found in the system.data.sql client namespace. SQL context represent the context under which the assembly is running. SQL pipe allows you to send result or message directly to the client application. SQL trigger context allow you to access information about the event that fire the trigger during a managed trigger operation. SQL connection allows you to connect a database before querying any data. SQL command allows you to send PSQL command to the database server. SQL data reader allows you to work with the result of a query, right? विशेष करे तमरो ए सबु क्लासेस भितरु SQL कनेक्शन ता यूज करा जाय, SQL कमांड ता यूज करा जाय, SQL डाटा रीडर ता यूज करा जाय. SQL कनेक्शन सुरु मु मोरो डाटा सोर्स माने डाटाबेस नेम कनेक्शन सब मु पास करबी कोडिंग रे तो फ्रंट एंड रे कोन हबो से पाथ सकासे से कनेक्शन सकासे डाटाबेस रे से कनेक्शन क्रिएट करबो. SQL कमांड थ्रू मु जहां भी क्वेरी देबी फ्रंट एंड रे या फिर जहां भी रिक्वेस्ट देबी सेटा क्वेरी हिसाब रे जाय कि मोर SQL सर्वर रे ता एग्जीक्यूट करबो एंड ता हिसाब रे से रिक्वायरमेंट हिसाब रे से फुलफिल करबो. SQL डाटा रीडर होची कोन डाटा को रीड कर परबो, रिट्रीव हो, व्यू हो, इंडेक्स हो, एवडा सब मोर यूज कर परबो SQL डाटा रीडर. बुझला? Yes sir. The following table lists the classes found in the system.data.sql type namespace and their corresponding Sailor SQL Server integration data types. SQL Server native data types, that is big int, then Sailor SQL Server the integration data types, SQL int 64. Binary SQL bytes, var binary SQL binary, small int SQL int 16. So it has the data सब data type and ता हिसाब रे तारो integration server रो meaning कोन सेउडा सब से दिछि. The following table lists the various attribute provided by the Microsoft.SQL Server namespace, that is attribute, SQL procedure, allow to create, manage, store procedure, SQL function, manage user definition function, SQL trigger, manage trigger, then SQL user defined type, manage user defined data types. You can create the following types of managed database objects: store procedure, function, trigger, and user defined types. Let us create a managed store procedure. The syntax for creating managed store procedure is create procedure name as external name assembly identifier dot type name method name, right? Step to create a managed store procedure, create a .NET class that implement the functionality of the store procedure, register that assembly in SQL Server, create a store procedure that refers to the actual method of the assembly. এটা হচ্ছে .NET তার ইয়েটা কোডিং টা তো আজকা ডেট রে তো তোমরা যদি SQL তুমি ইউজ করছো তাহলে .NET ফ্রেমওয়ার্ক রে তোমরা ইউজ করা হবে প্লাস তুমি যেহেতু আমি ওরাকল করছি তো ওরাকল হচ্ছে ওপেন সোর্স পাই ইউজ করা যায় যেমন তোমরা জাভা রে ও পাইথন রে ও সব টেস্ট তোমরা ইউজ করা যায় বাট যেটালে भी তুমি কোডিং ইউজ করিবো সেটালে তুমি প্রসিডিউর কু যেটালে ফলো করিবো তো SQL সার্ভার স্টোর প্রসিডিউর কু তুমি ফলো করবে. Yes sir. Register assembly, create assembly name, form, path dela, permission set, external access. Create an assembly that can access the external resource. Creating and manage store procedure, create procedure name dela, tar path dela, tar variable dela, external name dela, and tar save XML dela. Create a manage procedure named clear procedure by using the convert XML assembly.
Executing the manage store procedure, create @p XML set @p equal to select product ID, name, list price, form, procedure, production dot product for XML auto elements, root, then catalog, execute name dela, then tar path. Create a file named catalog.xml and write the data from the product table in XML format in the file. How about us? Last. जोटा कि काली सजी काली सकाळे करिवो दुला श्री ଆଜ୍ଞା ସାର୍। टाटा बाय बाय।